Hello students, welcome to my class UPSC with Sandeep Mam. And in this session, we are going to start Indian polity for the competitive exam. So SSC, CGL, UPSC और UPPSC के लिए we are going to start Indian polity का fresh batch on my channel UPSC with Sandeep Mam. So we are going to start basically Indian polity from the beginners level. तो आई विल अज्यूम कि आपको इंडियन पॉलिटी बिल्कुल नहीं आता, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड जितना भी टॉपिक्स होगा उसको डिटेल में करने की कोशिश करेंगे इन दिस सेशन. So I hope you will like my initiative. All those who are new to my channel, please subscribe my channel UPSC with Sandeep Mam and do share and like if you like the video. So let's move to the first class, इंडियन पॉलिटी का. तो सबसे पहले जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज व्हाट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन पॉलिटी को अगर समझना है, अगर ये समझना है कि हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इज वर्किंग एंड हाउ द गवर्नमेंट इन इंडिया फंक्शंस, तो वो बेसिकली समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर सुप्रीम लॉ. Constitution is supreme law of land. So if you understand constitution, so you will understand the Indian polity. तो हमें क्या है बेसिकली समझना पड़ेगा what is Indian Constitution. उसको भी समझने से पहले ये समझना पड़ेगा how the Indian Constitution was formed. तो उसकी मेकिंग भी समझनी पड़ेगी. तो वो पूरी जर्नी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स समझने पड़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. then only we can understand what Indian polity. तो इसी अप्रोच के साथ स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो ये स्टार्ट करने से पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कब बना और वो पूरी जर्नी को एक्सप्लोर करने से पहले सबसे पहले जो बात पता होनी चाहिए वो तो यही पता होना चाहिए दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन. तो ये सबसे पहले तो यही एड्रेस करना पड़ेगा क्लास में दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जहां से हमें इंडियन पॉलिटी को समझना स्टार्ट करना पड़ेगा. So what is constitution? Basically, constitution is what? It is a set of rules and regulations that will govern the state. So basic principles, basic rule and regulations जो आपको देश को गवर्न करने में हेल्प करेंगे, that is what constitution. So constitution क्या है? This is a philosophy which consists of the basic rules and principles. वो बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स जो आपको इम्पोर्टेंट है स्टेट को गवर्न करने के लिए, उसी को बोलते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और established precedents according to which the state is governed, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताएगा आपको? ये रूल किस चीज से रिलेटेड होंगे? ये रूल्स इस चीज से रिलेटेड होंगे दैट who will govern the people. तो आपका गवर्नेंस सिस्टम कैसा होगा? क्या वो डेमोक्रेसी होगा? क्या वो डेमोक्रेसी होगा तो कौन से टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होगा? क्या वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा या इनडायरेक्ट होगा, राइट? तो हु विल गवर्न, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को एड्रेस करेगा कॉन्स्टिट्यूशन. देन हाउ दे विल गवर्न, who will govern the state, how they will govern the state, what would be the structure of governance. तो ये सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताएगा दैट हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स रहेंगी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट की क्या लिमिटेशंस रहेंगी. That what government can do and what the government cannot do would be defined by what? By the basic rules and principles जो कहाँ mentioned होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अगर in one line if I say that constitution is what?
Constitution is basically a set of rules and principles जो आपको क्या बताएगा that how the state would be governed, how the state would be governed, and who will govern the state? The government will govern the state, and therefore constitution will define the powers of the governance system. That government के पास क्या क्या पावर्स होंगी ये भी क्या है क्लियरली डिफाइंड होगा किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में. इट विल ऑल्सो डिफाइन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स. जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे उनकी पावर्स को भी क्या है डिस्ट्रीब्यूट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन. देन द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट विल लिमिट द गवर्नमेंट. How it will limit the government? It will limit the government by setting the principle that government cannot do this. So it in a form, if I say constitution leads to a limited government, so we can say what? If there is a constitution, it means you are moving towards what? The system of limiting the government, because you are telling government कि उसका powers क्या है, what all it can do and what it cannot do. So basically constitution is what? It is a set of rules and principles, right? तो अभी हमें समझ गया. So when I am saying Indian constitution, so when I say Indian constitution, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? एक ऐसा रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का सेटअप जो ये डिफाइन करेगा कि हाउ इंडिया वुड बी गवर्न, जो ये डिसाइड करेगा कि इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट का मॉडल होगा. दैट बी क्या वो डेमोक्रेसी होगा, क्या वो मोनार्की होगा, कौन सा गवर्नमेंट का मॉडल होगा. तो गवर्नेंस मॉडल डिसाइड होगा. गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास क्या क्या पावर्स होंगी ये सब भी कहाँ क्लियरली मेंशन्ड होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर हमें समझना है दैट हाउ इंडियन पॉलिटी इज फंक्शनिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो यहीं से हमने स्टार्ट करना है अपनी क्लास को दैट हाउ the Indian constitution is deciding and governing and mentioning about the rules and principles which are important for the governance of country. तो ये समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना और कैसे बना. तो वही है आज की क्लास का एजेंडा, दैट इज व्हाट? द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो क्या लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना होगा? यही समझना है इसमें. तो अगर आप इसमें हमें क्या है थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड. तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो क्या समझ आता है? तो 1947 में क्या है इंडिया फ्री हो गया. सो वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड 1947 के बाद गवर्नेंस मॉडल कैसे चल रहा है? हाउ द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग. So India is functioning, India is governed through a constitution. तो 1947 के बाद हम कैसे गवर्न हो रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अगर मैं इससे पहले देखती हूँ 1947 से पहले, तो वी वर व्हाट? वी वर ब्रिटिश कॉलोनी. So India was what? A British colony. And India was governed how? So India was governed according to the rules framed by British government.
So we were governed according to the rules framed by British government. So we were not a independent nation, we were a British colony. तो जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी और जब हम कोशिश कर रहे थे दैट वी हैव टू गेट इंडिपेंडेंस एंड वी हैव टू लाइक बी अ फ्री कंट्री, तो तब साथ में ये भी डिस्कशन चल रहा था दैट वंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, एक बार जब आजाद हो जाएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू गवर्न द कंट्री। तो ये थॉट्स चल रहे थे। ये थॉट्स जब चल रहे थे तो इसका सोल्यूशन एक आदमी ने दिया, एंड हु वाज दैट पर्सन? दैट पर्सन वाज एम एन रॉय। एंड व्हाट सोल्यूशन ही गेव? he said that India needs a constitution, that we should have a constitution, and that constitution should be the source for providing the method of the governance of the country. तो क्या बोला उन्होंने? that once we are a free nation, the country should run according to what? Country should run according to constitution. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए, who was the first person to give the idea to have a Indian constitution, तो उसका आंसर क्या होगा? एम एन रॉय। एम एन रॉय वॉज द पर्सन हु गेव द आइडिया। तो हु गेव द आइडिया, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट हु वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इंडियन to give the idea of having a constitution for free India. So the answer is what? Answer is M.N. Roy, right? So after M.N. Roy gave this idea, even Indian National Congress also officially demanded. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इनिशियली डिमांड ऑफिशियली डिमांड किया 1935 में दैट इंडिया नीड्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन and India should be governed to according to a constitution, and this constitution should be framed by Indians. ये नहीं है कि अब constitution बोला तो Britishers बना दे, no. Indian National Congress said that we want to have a constitution that should govern India, and this constitution should be framed by Indians. तो ये Indian National Congress का डिमांड था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट व्हेन डिड एम.एन. रॉय गिव द आइडिया? सो एम.एन. रॉय गिव द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन इन 1934, and next year only in 1935 Indian National Congress officially demanded that there should be a constitution for India, right? तो अभी आप अगर हम हिस्टोरिकली इस बात को समझने की कोशिश करें, वी आर अ ब्रिटिश कॉलोनी, ऐसा तो होगा नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ डिमांड कर रही है और ब्रिटिशर्स कह रहे हैं ओ आपने मांगा ये लो अभी दे देते हैं, तो वैसा तो नहीं होगा। इट मींस देयर वुड बी अ स्ट्रगल, तो एक स्ट्रगल चलेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1935 में डिमांड करेगी, किस चीज की? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करेगी, that demand would be rejected outrightly. So that demand would be rejected by the British government. So British government is gonna reject this demand. They are going to say no, abhi there is no need to have a constitution for India, and जो rules हम बना रहे हैं उसी के according देश को govern करेंगे। So ये जो Indian National Congress का demand था, that was outrightly rejected by the British government. Then but आज तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हाउ डिड वी रीच दैट जर्नी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया? so that there is also a historical backing to that situation. So उसका रीजन लाइज इन द इंटरनेशनल इवेंट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही थी ड्यूरिंग 1930s एंड 1940s। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रही है वर्ल्ड लेवल पे जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इज हैविली इन्वॉल्व, वही जो बैकग्राउंड है हमारी इस डिमांड की फुलफिलमेंट की। तो व्हाट वाज द इवेंट गोइंग ऑन? so there was second world war going on. So second world war which started in 1939, that was going on and British was
party to this World War. Second World War में British was also a party. So whenever we are going for a war, whenever a country is going for a war, it needs certain things. तो क्या क्या चाहिए when you are getting involved in a war? You need manpower, you need money, you need manpower, you need to sure that there is what food security है, and etc etc. Weapons चाहिए आप. So these are the needs of a country when it is going for a war. तो अब ब्रिटिश के भी यही नीड्स हैं एंड दे वांट टू फुलफिल दीज नीड्स फ्रॉम व्हाट ब्रिटिश कॉलोनीज. फ्रॉम देयर कॉलोनीज दे वांट टू व्हाट grab the manpower, they want to grab money, and they want to even ensure the food security of their country. कि उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनीज से प्रॉपर फूड सप्लाई आता रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटेन में. ठीक है, तो ये सब उनका रिक्वायरमेंट है. अभी क्या है, ब्रिटिश कॉलोनीज में एक कॉलोनी क्या है, इंडिया भी है. एंड नाउ दे नीड द व्हाट सपोर्ट ऑफ इंडिया. सपोर्ट चाहिए इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन वॉर. तो जब आपको किसी से कुछ लेना है, इट्स ऑलवेज अ ट्रांजेक्शन. तो टू वे गेम है. सो यू आर ऑफर, यू वांट समथिंग, यू हैव टू इन रिटर्न ऑफर समथिंग. तो यही सिचुएशन के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ऑफरिंग इंडिया. एंड व्हाट इज क्या ऑफर कर रहे हैं? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज सेइंग that you were demanding constitution. तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहे थे, जो डिमांड हमने रिजेक्ट कर दी थी 1935 में. आपने डिमांड की जिसका आइडिया एमएन रॉय ने दिया था, राइट. हमने रिजेक्ट कर दी थी. तो ऐसा करते हैं हम लोग, आपको क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली एक्सेप्टेड what demand of the constitution. तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब ऑफिशियली एक्सेप्ट किया? फर्स्ट टाइम. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दैट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आपने याद रखना है. एंड व्हाट वाज द ईयर? वॉर के एक साल बाद 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इज व्हाट ऑफिशियली एक्सेप्टिंग द डिमांड टू हैव अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दे आर कमिंग विद द ऑफर. एंड विच ऑफर? दैट ऑफर इज नोन एज ऑगस्ट ऑफर. So August offer 1940 is the first time when Britishers will officially accept the demand of Indians to have a constitution. So directly आपका question आएगा, when was the when was first time officially the demand to have Indian constitution accepted? So what would be our answer? Our answer would be what? August offer 1940. So I hope it is clear. तो एक सेकेंड में रिवाइज करते हैं. अभी तक क्या किया? अभी तक किया कि अगर इंडियन पॉलिटी समझना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट? वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फिर ये समझा दैट व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स that are important for what? Governance. And these rules and regulations basically define the powers and limits of the government, right? Then समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने पहली बार दिया? Who gave the idea? ये भी अभी डिस्कस किया. तो एमएन रॉय gave the idea. ईयर भी हमने डिस्कस किया, कौन सा ईयर था? इन 1934. एंड इसके नेक्स्ट ईयर
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया? 1935 में। जो डिमांड के क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। दिस डिमांड वाज रिजेक्टेड। देन क्या समझे, देयर वाज अ इवेंट गोइंग ऑन एट इंटरनेशनल लेवल एंड व्हाट वाज द इवेंट, दैट वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर which started in 1939. So in the backdrop of this event, British government first time came with an offer known as August offer 1940, जिसमें वो पहली बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम accepting the demand to have constitution, right? तो इतना अभी तक हमने किया, लेकिन अभी अगस्त ऑफर का क्या हुआ? क्या अगस्त ऑफर के अंडर ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है? तो आंसर इज नो। सो व्हाट, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड दिस ऑफर बिकॉज इस ऑफर में कुछ लिमिटेशंस थी। तो अगस्त ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1940 में आया एंड दिस इज रिजेक्टेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टांस क्या था? दे रिजेक्टेड। Then British government again came up with another offer which they came up in 1942. तो 1942 में एक और ऑफर देंगे जिसमें वो improved वर्जन के साथ आएंगे, that let's form a constitution for India. And what was that offer? That offer was Cripps mission. Even in Cripps mission they are talking to have a Indian constitution, that we will form the constitution of India. But this plan again was rejected by Indian National Congress. तो ध्यान से याद रखना है, ऑर्डर में सबसे पहले क्या आया? अगस्त ऑफर। कौन से साल में? 1940 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। देन 2 years later on there is another plan that is known as Cripps mission which is again rejected, and finally British came up with a plan which is known as Cabinet Mission Plan. So which plan? Cabinet Mission Plan. And कौन से साल में आया Cabinet Mission Plan? It came in 1946. So this is very, very important. And this plan was finally accepted. This offer was finally accepted by Indian National Congress, and therefore the Indian Constitution is formed under which act? It is formed under Cabinet Mission Plan. And what does this Cabinet Mission Plan says? It says that we will have a Constituent Assembly. एक body होगी जिसका नाम क्या होगा? Constituent Assembly. Assembly means what? Grouping. तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी होगी जिसका नाम क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है? इसका काम है टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So what is the function of Constituent Assembly? To frame the Constitution for India. And ये Constituent Assembly बनानी है, ये कौन से प्लान में बोला गया? It was under the Cabinet Mission Plan. तो यही बॉडी बनेगी फाइनली 1946 में, एक Constituent Assembly बनेगी जो क्या बनाएगी? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो 3 प्लान आपने ऑर्डर में याद रखने हैं। सबसे पहला कौन सा है? अगस्त ऑफर। देन देयर इज अ क्रिप्स मिशन, these both were rejected, and finally the British government came up with what? Cabinet Mission Plan in 1946 which said of framing a Constituent Assembly जिसका काम क्या होगा? To frame the Constitution for India. And this plan came in 1946 which was finally accepted, and a Constituent Assembly was formed under this plan in 1946 which finally framed the Constitution of India.
तो तीनों प्लान ऑर्डर में याद रखने, तो अगर भूल जाओ तो एक कोड याद रख सकते हो छोटा सा, सीमेंट आता है ना एसीसी का, तो ए इज फॉर अगस्त ऑफर, देन देयर इज अ क्रिप्स मिशन एंड फाइनली देयर इज अ कैबिनेट मिशन प्लान। तो अगर क्वेश्चन आए द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर व्हिच एक्ट, तो इट इज फॉर्म्ड अंडर व्हाट, कैबिनेट मिशन प्लान। कौन से साल में आया, 1946। तो ये दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे। So I hope you are clear with this thing. So एक बार अगर रिवाइज करें, that what, who gave the idea to have the constitution? M.N. Roy gave the idea, and then Indian National Congress also demanded to have the constitution for India, but this demand earlier were rejected by the British government. But in the backdrop of World War II, where the British government needed the support of different colonies, including India, so they offered us something that was known by the name August Offer 1940, जिसमें उन्होंने पहली बार ये एक्सेप्ट किया that India can have its own constitution, and but this offer was rejected. Then they came up with what? They came up with Cripps Mission, which again was rejected by Indian National Congress, and finally, under the Cabinet Mission Plan, a Constituent Assembly was formed, which ultimately framed the Indian Constitution. तो अभी आप बेसिकली समझ गए हो कि वो बॉडी जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया वो कैसे बनी, राइट? So this is the person, M.N. Roy, who gave the idea to have the Indian Constitution. So this is the picture of M.N. Roy. आप देख सकते हैं that he gave the idea. First time the idea to have a Indian Constitution was given by M.N. Roy. Right? Constitution क्या है ये भी हमने समझा. And what would be the agenda for the next class? We are going to understand in the next class how the Constituent Assembly which was formed under which plan? Which was formed under Cabinet Mission Plan. जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी, इसने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया? हाउ डिड इट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? कितना टाइम लगा? हाउ डिड इट फंक्शन? हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? एंड कितना टाइम लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, राइट? तो वो सारी डिटेल्स हमने करनी है इन द नेक्स्ट सेक्शन, राइट? तो आज के सेशन में जो समझा उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. So I want you to attempt these questions and you need to answer these questions in the comment section. तो ये दोनों questions आपने comment section में इनका answer देना है. The first question is what? Which of the following statement best reflects the chief purpose? Chief purpose क्या मतलब? Main काम क्या है? What is the main function, main purpose, chief purpose of the constitution of a country? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जब किसी देश के लिए, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है, वो आपने बताना है. So these are the four options. Best option आपने चूज करना है. So this is UPSC previous year question. आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन. तो नेक्स्ट सेशन में क्या है, इसका आंसर डिस्कस करेंगे. तो फोर ऑप्शंस में से आपने इसका आंसर सिलेक्ट करके बताना है. एंड देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, राइट? एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. एंड व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? दैट इज आल्सो ऑलमोस्ट द सेम. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन, तो किस गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलेंगे? ये चार ऑप्शंस हैं एंड दिस इज आल्सो यूपीएससी प्रीवियस ईयर. तो आपने बताना है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. तो आंसर मी बोथ द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन
and we are going to discuss their answer in the next class. So I hope जितना भी आज की क्लास में किया आपको क्लियर होगा, and we are going to meet for the next section very soon. So stay tuned to my channel, and if you liked my class, please share and subscribe. Thank you so much. उठ जो